శ్రీవారి కళ్యాణ ఉత్సవం. శ్రియకాంతాయ కళ్యాణ నిధయే నిధయేర్థినాం శ్రీవేంకట నివాసాయ శ్రీనివాసాయ తే నమః. హరి ఓం. శ్రీ గోవింద గోవింద గోవింద. అస్య శ్రీ భగవతో మహాపురుషస్య మహావిష్ణోః ఆజ్ఞయా ప్రవర్తమానస్య అద్య బ్రహ్మణః ద్వితీయపరార్థే శ్వేతవరాహకల్పే వైవస్వతమన్వంతరే కలియుగే ప్రథమపాదే జంబూద్వీపే భారతవర్షే భరతఖండే శకాబ్దే మేరోః దక్షిణే పార్శ్వే అస్మిన్ వర్తమానే వ్యావహారిక శ్రీ ఆదివరాహక్షేత్రే వెంకటాచలే అస్య దేవదేవస్య భగవతో నారాయణస్య శ్రియఃపతేః పురుషోత్తమస్య శ్రీభూమి నీలాసమేతస్య శ్రీ శ్రీనివాసస్వామినః కళ్యాణోత్సవం కర్మ అంగం మమ. గృహస్థులు వారి యొక్క గోత్రాలను మనసులో స్మరించుకోండి. వారి పేర్లు, ధర్మపత్ని పేర్లు, కుటుంబ సభ్యుల పేర్లు, అందరి పేర్లు మనసులో స్మరించుకుంటూ వారి వారి కోరికలని, ప్రార్థనల్ని స్వామివారికి విన్నవించుకోవాల్సింది. సహ కుటుంబానాం సహ పరివారాణాం సహ బాంధవానాం క్షేమస్థైర్య ధైర్య వీర్య విజయ అభయ ఆయుః ఆరోగ్య ఐశ్వర్యానాం అభివృద్ధ్యర్థం ఉత్తరోత్తర కైంకర్యాణం అభివృద్ధ్యర్థం శ్రీ శ్రీనివాసస్వామి కరుణ కటాక్ష వీక్షణ పరిపూర్ణ సిద్ధ్యర్థం లోకక్షేమార్థం కళ్యాణోత్సవం ఆచార్యముఖేన అహం కారయిష్యే. సర్వం శ్రీనివాసార్పణమస్తు. వెంకటరమణ గోవింద గోవింద. శ్రీ వెంకటాచలాధీశం శ్రీయాత్యాసిత వక్షసం ஸ்ரித சேதன மந்தாரம் ஸ்ரீனிவாசம் மகம்பஜே என்று அந்த திருமலை அப்பனை செவித்து கொண்டு இன்றைய கல்யாண உற்சவத்திற்காக வந்திருக்கும் பக்தர்கள், பெருமாளை சேவிக்கும் பக்தர்கள் அனைவரையும் வரவேற்பது திருமதி ஏ அருணா. அகிலாண்ட கோட்டி பிரம்மாண்ட நாயகனே கோவிந்தா கோவிந்தா. திருமலை அப்பனுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே சங்கல்ப மந்திரங்களை தொடர்ந்து சேனா முதலி எனப்படும் விஸ்வக்சேனருக்கு ஆராதனை செய்யப்படுகிறது.
அதனைத் தொடர்ந்து மங்கள வாத்தியங்கள் வேத மந்திரங்களுடன் ஆரம்பமாகிறது திருக்கல்யாண மகோத்சவம். பகவானே வேங்கடவனே, கோவர்தனகிரிதாரி கோவிந்தா கோவிந்தா, சப்தகிரிவாசனே வேங்கடவனே கோவிந்தா கோவிந்தா என்று அந்த பிராட்டிமார்களையும் செவிக்கலாம். ஸ்ரீதேவி பூதேவி சமேதனாய மலையப்ப சுவாமியே கோவிந்தா, லக்ஷ்மி ரமண கோவிந்தா, வசுந்தரா ரமண கோவிந்தா கோவிந்தா என்று திருமலை அப்பனுடைய தேவியர்களான ஸ்ரீதேவி பூதேவி பிராட்டிமார்களையும் சுக்லாம் பரதரம் விஷ்ணும் சிசுவர்ணம் சதுர்புஜம் பிரசன்னவதனம் த்யாயேத் சர்வவிக்னோபசாந்தியே யஸ்ய தருதவக்த்ராத்யாः பார்சத்யாः பரக்ஷதம் விக்னம் நிக்னந்தி சததம் விஸ்வக்சேனந்தமாஸ்ரயே ஸ்ரௌதஸ்மார்த்தாதிகं கர்ம நிఖிலம் ஏன சூத்ரிதம் தஸ்மை సమస్త వేదార్థ విదే విఘనసే నమః. ప్రతిస్మృతినిధి పూర్ణం శాస్త్రకల్లోల సంకులం విష్ణుభక్తిదకం శుద్ధం వందే శ్రీవిఘ్నోర్ణవం ప్రాణానామ్యాం. ఓం భూః ఓం భువః ఓం స్వః ఓం మాః ఓం జనః ఓం తపః ఓం సత్యం ఓం తత్సవితుర్వరేణ్యం భర్గో దేవస్య ధీమహి ధియో యో నః ప్రచోదయాత్ దేవో మా భోజ్యోతిరస అమృతం బ్రహ్మ భూర్భువస్సురం అస్యాం స్వదోస్య దేవస్య భగవతో నారాయణస్య ప్రియపురుషోత్తమస్య శ్రీభూనీలాసుమేధస్య శ్రీ శ్రీనివాసస్వామినః వైవాహికోత్సకర్మాంగం స్థండిల పరిభరిస్న సర్వవృత్తంత్రవశుద్ధత్వం శాంతత్వం సగపుణ్యావాచకర్మ రిషి. ఓం ధారా సప్తశ్రీమాంశేషు సరత్సరత్సర్వోర్దేషు అభోవిరన్హన్ పరిపాదేశే గుణోమృతాగం తరంగం ధర్మ ఇదమాప శివా శుధమా శాంతా శాంతమా శివా శుధమా పూతా పూతమా పుణ్యా పుణ్యతమా మేధ్యా మేధ్యతమా అమృతాం దరసా పూతా బ్రహ్మ పవిత్రేణ పూతా సూర్య సరస్వతి ఆపో వాయుగం సర్వం విశ్వాభూతాన్యాప ప్రాణావాప పశువాపో నమాపో అమృతమాప సమ్రాడాప విరాడాప స్వరాడాప ఛందావిశాపో జ్యోతివిశాపో యజో విశాప సత్యమాప సర్వా దేవతాపో భూర్భో స్వరాపోం. అస్మిన్ కుంభేంగా సదిత్నావాహయామి యదేశదంబరణే సహస్రం విజ్ఞాః పాశాభిధాః పుత్ర తేభ్యోనంద్రస్వదాది విష్ణుర్విశ్వే దేవామించంతమత స్వస్య. వరుణమావాహయామి ప్రియసమావాహయామి రక్తాంధ్రమావాహయామి యాదస్పదమావాహయామి. వరుణాయ నమః వరుణస్యేదమాసనం వరుణాయ నమః. ఇదం పాద్యం సమర్ప్యామి ఇదమర్ఘ్యం సమర్ప్యామి ఇదమాచమనం సమర్ప్యామి. యతే ప్రోతస్త్రోత్రయాభరణ ఉపవీత పుష్పగంధోపరీపాలంకారార్థాః ఇమే అక్షతాः సర్వోపచారాः. సర్వతీర్థేరం పుణ్యం పావనం సర్వకారణం విష్ణుపాదోద్ధవం శుద్ధం సర్వమంగళదాయిన కరిష్యమాణసకర్మణా నిర్విఘ్నేన ప్రసమాప్యర్థం విశ్వక్సేనారాధనం కరిష్యే. విశ్వక్సేనం చతుర్బాహుం శంఖచక్ర సమన్వితం వ్యాప్తిం శృంగకేతం సుపుష్పరథవాహనం పూర్వాషాఢోద్భవం దేవం దక్షిణాముఖమర్చేత్. ఆగ్నేయోస్మాద్దామహేత్తాశ్చేదాత్తం యథోత్సంభో వైరాజంతే సుతన్నిధత్తాం ప్రేష్యాం దేశాభుదానామనాది యామే స్థాన్ దందాన్ దాతు. ఓం భూః పద్మాకారండరే శక్సేనమావాహయామి శాంతమావాహయామి హరమావాహయామి అమితమావాహయామి తత్తత్నీం సూత్రహదీమావాహయామి వామే జ్యామావాహయామి తత్తత్నే విశ్వక్సేనస్యేదమాసనం. విశ్వక్సేనాయ నమః. ఇదం పాద్యం సమర్ప్యామి ఇదమర్ఘ్యం సమర్ప్యామి ఇదమాచమనం సమర్ప్యామి. సర్వోపచారార్థం అక్షతాన్ సమర్పయామి. విశ్వక్సేన స్మృతా రాజా భగవాన్ సర్వకర్మణ తస్మాజ్ఞానం భాసేత కర్మణాన్ విఘ్నశాంతి. ఆరంభే కర్మణాన్ పుష్టే విజ్ఞానాన్ పరిసమాప్య కుర్యాత్ సుభిర్వారస్య విశ్వక్సేనస్య పూజనం భగవద్గురునిజ్ఞాతః పుణ్యః పుణ్యాహం వాజయిష్యే. ఓం వాచదాం సుపుణ్యాహం కరోమి కురుష్వ స్వస్థ ప్రోక్షితం అస్తు. ప్రజాపతి ప్రేతాం ప్రేతాం భగవాన్ ప్రజాపతి శామ్యంతు ఘోరాని శామ్యంతు పాపాన్ శామ్యంతు వాయుదేహ శుభాని వర్ధంతాం వర్ధంతాం శుభాని శామ్యంతు ఘోరాని శామ్యంతు పాపాన్ శామ్యంతు వాయుదేహ శుభాని వర్ధంతాం వర్ధంతాం శుభాని శామ్యంతు ఘోరాని శామ్యంతు పాపాన్ శామ్యంతు వాయుదేహ శుభాని వర్ధంతాం వర్ధంతాం శుభాని. ఓం మతో దేవాః వందనతో విష్ణుచక్రమే పృథివ్యాः సప్తధామభిः ఇదం విష్ణుర్విచక్రమే త్రయధానదేవతం సమూఢమస్వాగం సరే త్రీణి పదా విచక్రమే విష్ణుర్గోపాదాభ్యः తతో ధర్మాణి ధారయన్నే విష్ణోః కర్మాణి పశ్యేతో వృతాని విశ్వసే. ఇంద్రస్య జస్సఖాః తద్విష్ణోః పరమం పదకం సదా పశ్యంతి సూరయः దివీవ చక్షురాతతం తద్విప్రాసో వన్యవోజార్ధ్రవాగం దత్సవిందతే. విష్ణోర్జత్పరమం పదం ద్రవిణోదా ద్రవిణశస్త్రస్య ద్రవిణోదా శరీరస్య ప్రేంసతే. ద్రవిణోదా వీరవతి విషణ్ణో ద్రవిణోధారాస్య దీర్ఘమాయుః. యత్పుణ్యం నక్షత్రం దద్దత్కర్వీతోపవిషం
यदा वै सूर्य भजति अथ नक्षत्रन्नयति यावत् तत्र सूर्यो गच्छेति यत्तदिहन्यं पश्येति तावत् गुरुजत्कारी स्यात् पुण्याः यव गुरुते ओं भूहतिविरोक्तिष्ठायामस्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं तण्डिलपरिवेशनासुरोत्तन्द्रविशुद्धतं शान्तत्वं स पुण्यावाचमणि पुण्यां ब्रवन्तोः ब्रवन्तु पुण्यां कर्मणोऽस्तु कर्मण पुण्यां ब्रवन्तोः ब्रवन्तु पुण्यां कर्मणोऽस्तु कर्मण पुण्यां ब्रवन्तोः ब्रवन्तु पुण्याहं कर्मणोऽस्तु स्वस्तिरेन्द्रोर्धस्वास्तनः पूषा श्वेदाः स्वस्तिनस्तार्क्ष्वारिष्णेमि स्वस्तिनो बृहस्पतिर्ददातु ओं भूः अद्य विशेषमिष्टायामस्यां श्रीवतो नारायणस्य शेषफलपुषात्मस्य श्रीभुवनिरासमेत श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं स्थण्डिलपरिवेशनासुरोत्तं शान्तत्वं सह पुण्यावाचरुणि स्वस्तिं ब्रवन्तोः ब्रवन्तु कर्मणे स्वस्ति कर्मणः स्वस्तिं ब्रवन्तोः ब्रवन्तु कर्मणे स्वस्ति कर्मणः स्वस्तिं ब्रवन्तोः ब्रवन्तु कर्मणे स्वस्ति वृद्ध्यास्माव्यै नमसां सद्यां त्रिन्देवमित्रधेयन्नोऽस्तु अणोराधान् हविषा वर्धयन्तः शतञ्जीवें सदस्य वीराः ओं भूहतिविरोक्तिष्ठायामस्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं स्थण्डिलपरिवेशनासुरोत्तं शान्तत्वं स पुण्यावाचरुणि वृद्धिं ब्रवन्तोः ब्रवन्तु कर्मरुद्धतां कर्मवृद्धिं ब्रवन्तोः ब्रवन्तु कर्मरुद्धतां कर्मणवृद्धिं ब्रवन्तोः ब्रवन्तु कर्मरुद्धतां वृद्धिः समृद्धिः पुण्या समृद्धिः आपोहिष्ठामया भुवस्थानमूर्जे ददातनां महेरणाय चक्षुषे योपशुभदमारधस्तस्य भार्य तेजनः उषतिरिव मातरः तस्माहरङ्गमावो सक्ष्याय जन्मधा आपो जनेधा जनः हिरण्यवर्णाः शुचयः पावकायाः जातः कच्छपोजाः सुन्दरः अग्नीया गर्भं दद्रे विरूपास्थानापस्सग्गुस्य न भवन्तु पवमानस्व अर्जुनः पवित्रेण विचर्षणिः यः पोता सपनातु मा पुनन्तु मा देवजनाः पुनन्तु मनवो धिया पुनन्तु विश्वायुवः जातवेदः पवित्रवते पवित्रेण पुनाहि मा शुक्रेण देवदिद्यते अग्ने कृत्वा खलुगुम्रणु येन देवाः पवित्रेण आत्मानं पुनते सदा तेन सहस्रधारेण पावमान्यः पुनन्तु मां प्राजापत्यं पवित्रं यतोऽद्यामहं हिरण्मयं तेन ब्रह्मविदो वयं पूतं ब्रह्म पुनीमहे इन्द्रस्सुनीति सहमाप्नातु सोमस्तस्यावरुणः समीक्षा यमो राजाः प्रवणाभिः पुनात्मा जातवेदमोर्जेन्द्वाप्नातु तच्छंयोरावृणीमहे गातं यज्ञाय गातं यज्ञपदे दैवीः स्वस्तिरस्तनः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जगातु भेषजं षण्णो अस्तद्यपदेः षण्चतुष्पदे ओं शान्ति शान्ति शान्तिः प्राच्याहान्ति देवार्तुजा मार्जयन्तां दक्षिणाजान्ति स्मासाः पितरा मार्जयन्तां प्रदेच्याहान्ति शीघ्राः पशवः मार्जयन्तां उदीहेच्छान्तिश्चापवोषधया वनस्पतयः मार्जयन्ताम् ऊर्ध्वायाहामित्यज्ञस्संवत्सरो यज्ञवदन्मार्जयन्ताम् अथो धराधरे नागेभ्यो मार्जयन्ताम् वास्तोःस्पदे प्रजानि हस्मान् स्वावेशो अनमेव भवानः यत्ते महे प्रजन्नाशस्वन्ने दद्यपदे षण्चतुष्पदे वास्तोः स्वदे शक्मया संसदा ते सक्षीमहि तैरन्या गातमत्या आवह क्षेमोदया गेवरन्नो यूयं पातस्वस्तभिः सदानः अमीवः वास्तोः स्पदे विश्वारूपाण्याभिषन्ने तथा सेवयेदनः अनोरणीयान् महतो महीयानात्मा गुहायां नितोस्यन्तोः तमः कथं पश्यति वीतशोको धातुप्रसादान् महिमानुमीशं वर्णान्माय सक्षणान् पुनः पाद्याचं सर्पयामि वर्णान्माय सक्षणादास्थानं प्रेषयामि शोभनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च ఓం నమో వెంకటేశాయ. கோவிந்தா கோவிந்தா. திருமலை அப்பனுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே விஸ்வக்சேன் ஆராதனை சுத்தி புண்ணிய வச்சனத்தை சேவித்தோம். அடுத்ததாக அங்குரார்ப்பண கைங்கரியத்தை சேவிக்க இருக்கிறோம். அங்குரார்ப்பணம் என்பது நவதானியங்களை மண்பாலிகைகளிலே சேர்த்து அதன் மீது தீர்த்தங்களை சேர்த்து அக்ஷதை திருத்துழா இவைகளால் தேவதைகளை பூஜிப்பதே அங்குரார்ப்பணம். மலையப்ப சுவாமிக்கு மலை குனிய நின்ற பெருமாள் என்ற திருநாமம் உண்டு. திருமலையில் நித்யோத்சவம், பட்சோத்சவம், மாசோத்சவம், சம்வத்சரோத்சவம், தெப்போத்சவம், வசந்தோத்சவம், பிரம்மோத்சவம், பவித்ரோத்சவம் என்று எல்லா உற்சவங்களும் சேவைகளும் மலையப்ப சுவாமிக்கே நடத்தப்படுகிறது.
திருவேங்கடமுடையானுக்கு சேஷன் என்றால் மிகவும் பிரியம். அந்த சேஷன் திருமாலுக்கு படுக்கையாக மட்டுமின்றி குடையாகவும் சிம்மாசனமாகவும் மரவடி விளக்காகவும் மாறி பெருமாளுக்கு கைங்கரியம் செய்பவர். சென்றால் குடையாம், இருந்தால் சிங்காசனமாம், நின்றால் மரவடியாம் நீள் கடலுள், என்றும் புனையா மணிவிளக்காம், பூம்பட்டாம் புல்கும் அணையாம். திருமார்க்கு அரவு என்கிறார் பொய்கை ஆழ்வார். பக்தர்களே, அப்படிப்பட்ட பாம்புடன் தீராத பகை கொண்ட கருணனை தன் ஊர்தியாக கொண்டுள்ளான் பகவான். புல்லூர்தி என மங்கை மன்னன் அழகாக அவனை அழைக்கிறார். மனிதன் உடல் நலத்திற்கு மிகவும் அவசியமானது பால். குழந்தை பருவத்திலாகட்டும், நோன்பு நோர்க்கும் போதாகட்டும், நோய்வாய் வந்த பொழுதாகட்டும், முதுமை பருவத்திலாகட்டும் கூட பால் அவசியம் தேவைப்படுகிறது. அத்தகைய சிறப்புமிக்க பாலாகிய கடல் வண்ணனான திருமால் பள்ளி கொண்டுள்ளான் பார்க்கடலிலே கிடக்கும் ஆதி நெடுமால் என்று ஆழ்வாரின் திருவாக்கு. அப்படிப்பட்ட அந்த எம்பெருமானுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே திருமுலை சாற்றுதல் கைங்கரியத்தை முடித்துக்கொண்டு ரக்ஷைகளுக்கு பூஜை, ரக்ஷா பூஜையை சேவிக்கலாம். பகவானே வேங்கடவனே கோவிந்தா கோவிந்தா என்று சேவிப்போம் அந்த வேங்கடவனை. प्रतिसर देवतापूजां च करिष्ये। ओम शन्नो धत्तां तपसोर्जर्तां स्वयं भरग्रें देवताय नागराजमावाहयामि, सहस्रीशमावाहयामि, शेषमावाहयामि, अनन्तमावाहयामि। परिसरदेवताभ्यो नमः। इदमासनम् इदं पाद्यं समर्पयामि, इदमर्घ्यं समर्पयामि, इदमार्जुनं समर्पयामि। सर्वोपचारार्थम् अक्षतान् समर्पयामि। हरिः ओम। स्वस्ति नः वेदां विष्णुना भगः स्वस्ति देवेन्द्रनर्वणः स्वस्ति पूषां सरोदादनः स्वस्ति द्यावाः पृथिवी सुचेतनाः स्वस्येः वायुं बभ्रामहे सोमं स्वस्ति भुवनस्य स्पतिः बृहस्पतिं सर्वगणं स्वस्येः स्वस्ति आदित्यासो भवन्तुनः विश्वेः देवानोः अद्या स्वस्तेः वैश्वानरो वसुरग्निः स्वस्तेः देवाः वन्त्रिभुवः स्वस्तेः स्वस्ति नः रुद्रः पात्वं वसः स्वस्ति मित्रावरुणः स्वस्ति वध्ये रेवती स्वस्ति न इंद्रश्च अग्निश्च स्वस्ति नः इति कृधि स्वस्ति बन्धामनुचरेम सूर्या चन्द्रमसामिव पुनर्थदाघ्नदा जानता संगमे महि स्वस्ति नन्तार्क्षमरिष्ठनेमिं महद्भूतं वायसं देवतानाम् असुरघ्नमिन्द्रसकं समत्सो बृहद्यसो नावुवारुहेम अम्होमुचा माङ्गिरा सञ्जयञ्च स्वस्त्याः त्रेयं मनसादिदाक्षं प्रेतपानिशरणं प्रपद्ये स्वस्तं बाधेष्वभयन्नोऽस्तु शुभगं शुभम्। ஓம் நமோ நாராயணா கோவிந்தா கோவிந்தா. திருமலை அப்பனுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே ரக்ஷா பூஜையை முடித்துக்கொண்டு ரக்ஷா பந்தன கைங்கரியத்தை சேவிக்க இருக்கிறோம். இந்த ரக்ஷா பந்தனம் என்பது காப்பு கட்டுதல் என்று பெயர். கருவுடை மேகங்கள் கண்டால் உன்னை கண்டால் ஓக்கும் கண்கள் என்று பெரியாழ்வாரின் நெடிய மாலை மேகத்துடன் ஒப்பிடுகிறார். திருமாலை மேகத்துடன் ஒப்பிட காரணம் என்னவென்றால், முகில் மழை பொழிவதன் மூலம் உலகை காப்பது போன்று எம்பெருமான் உலகை காக்கும் தொழிலை மேற்கொண்டிருப்பதுதான். ஸ்ரீ வைஷ்ணவத்திலே ஆத்ம அவலோகன முகத்தால் பிரணவஸ்வரூபமான நாராயணனையும் அவன் சக்தியையும் கடமையையும் அறிய 3 சாவிகள் முறையே திருமந்திரம், துவயம், சரமஸ்லோகம் என்று கூறப்படுகிறது. இந்த சாவியை உபயோகிக்கும் திறனை ஆச்சாரிய முகத்திலே தான் காணப்பெறும். நாராயணன் நமக்கே பறை தருவான் என்று. ஏகோஹவை நாராயண ஆசீத் ந பிரம்மா நச ஈசானா என்று. அதாவது பத்ரிகாசிரமத்திலே திருமந்திரத்தை நரனுக்கும், ஸ்ரீ விஷ்ணு லோகத்திலே துவயத்தை பெரிய பிராட்டிக்கும், தன்னையே சரண் என்று பற்றி நின்ற அர்ஜுனனுக்கு சரம ஸ்லோகத்தை தேர்தட்டிலும் உபதேசித்துள்ளான் எம்பெருமான். அப்படிப்பட்ட அந்த எம்பெருமான் இதோ திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியத்தை ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறார் அர்ச்சக சுவாமியின் மூலமாக. பகவானே, திருவேங்கடவனே,
ஏடு கொண்டலுவாடா வெங்கடரமணா கோவிந்தா கோவிந்தா என்று அந்த பகவானை ஆத்மார்த்தமாக சேவிக்கலாம், மானசீகமாக சேவிக்கலாம். இதோ பகவானுடைய திருக்கரத்திலே அர்ச்சக சுவாமி அந்த ரக்ஷையை அணிவிக்கிறார். முக்கோடி தேவர்களும் முனிவர்களும் யாவரும் மெச்சும் திருவேங்கடத்தில் நின்று கொண்டு இருக்கும் பெருமாளே, அடியே நிச்சைப்படி எந்தன் முன் காட்சி தருவாய் என்று முன்பாதியில் வணங்கி பிற்பகுதியில் மத்ச கூர்மா வராகா நரசிங்கா வாமனா பரசுராமா ரகுராமா பலராமா கிருஷ்ணா கல்கி என 10 அவதார மூர்த்திகளின் திருநாமங்களை சொல்ல கேட்க வருவாயாக என்று பொருள். அப்படி அந்த பகவானின் 5 ஆயுதங்களான சங்கு, சக்கரம், கதை, வாள், வில் இப்படி முறையே பொய்கையாழ்வார், திருமழிசையாழ்வார், பூதத்தாழ்வார், பேயாழ்வார், திருமங்கை ஆழ்வார்களாக பிறந்தனர். சேனை முதலிகள் விஸ்வக்சேனர், கருடர், ஸ்ரீ வைனதேயர் முறையே நம்மாழ்வார், பெரியாழ்வார், மதுரகவி ஆழ்வார் ஆக பிறந்தார்களாம். இப்படி அந்த பகவானுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே பகவானின் கைங்கரியங்களில் ஆழ்வார்கள் எல்லாம் கூட அந்த பகவானுக்கு தொண்டு செய்தார்கள். ஸ்ரீதேவி பிராட்டிக்கு ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியம் நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது. நகசின் நப அபராத்தியதி என்பது இராமாயணத்திலே சீதா பிராட்டியின் வாக்கியம். தவறு செய்யாதவர்கள் யாரும் இல்லை என்பது சீதா பிராட்டியின் வார்த்தை. பொறுமையை கடைபிடிக்க செய்தவர் பூமாதேவி. 2 தேவியர்களும் பக்தர்களை காப்பது என்பது நோக்கம். அதற்காகவே அவர்கள் இருவரும் விரதம் பூண்டவர்கள். அப்படி நம்மை காக்கும் பெருமாளுக்கும் 2 தேவியர்களுக்கும் ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியம் நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது. காப்பு கட்டுதல் என்றும் பெயர். ஆக இப்பூமி பிராட்டிக்கும் ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியத்தை முடித்தார் அர்ச்சக சுவாமி. எம்பெருமானே, உன்னை தவிர இந்த உலகிலே வேறு காப்பவர் யார் இருக்கிறார்? காப்பாரார் இவ்விடத்து என்பது நம்மாழ்வார் பாசுரம். அப்படி அந்த நம்மாழ்வார் பாசுரத்தின் படியாக எம்பெருமானுடைய திருவடிகளை செவித்து கொண்டு நாம் அவனுடைய நாமங்களை கூறலாம். கோவிந்தா கோவிந்தா வேங்கடவனே கோவிந்தா கோவிந்தா என்று. அடுத்ததாக அக்னி பிரதிஷ்டை ஹோமத்தை சேவிக்க உள்ளோம். அக்னியை ஆவாகனம் செய்து ஹோமம் செய்வார்கள். இறுதியிலே பூர்ணாகுதியை செய்வார்கள். இதோ அக்னியை ஆவாகனம் செய்ய அக்னி பிரதிஷ்டை. ஆகார ஹோம கர்ம ரிஷே ஓம் ஏதோன்விந்திரம் ஸ்வாஹாம் சுத்தம் சுத்தேன் சாம்னாஹ शुद्धैरक्तैर्वाह रुद्धांशं शुद्धाशीर्वाहान्मुक्तु मयि देवाद्रेणमाजन्तां मय्यासीरस्तमयि देवहूति देव्या होता रामचन्द्रपूर्वेरिक्तास्यां धर्मासुवीराः मक्षीजन्तुम्यान् हव्यागोति सत्यामनु सौम्यास्तु ये नामानिगाहं गतमर्चनाहं विश्वे देवासो अधिवोचतामि देवीः षडर्वीरणः कृणोत विश्वे देवासः वीरध्वं महाः स्मयप्रिया मातनो बिर्मानसामस्वेते सोमराजन् उत्थन्यमानमस्यामेध्यां वाप्मानं मृगमानसन्तु दिवानसन्तु प्रदस्यच्छन्नामाता पृथिवीतागसादा जातवेदभुवनश्रेतैः अग्निमश्रद्धा दिव्यवागं शमे गर्भाजनेन्व्यां योभूः घृतः प्रतीको घृतयो निरग्नि घृतैः समिद्धोग्नमस्यान्नं घृतः पुषस्वा सहितो वहन्तगतं भवन् श्रिया यक्षदेवान् उपावरोह जातवेदः पुनस्तं देवेभ्यो हव्यं वणप्रियानन् आयुष्प्रजाग्मस्मास्रोदीति अनुद्रवणे अग्नः जाहि विधेय गृणानो विदाते निहोदा सुसूरिषि ऐतेन मन्यस्वा अनुमतेन मन्यस्वा सरस्तेन मन्यस्वा देवसवितः प्रसवा ब्रह्मजज्ञानं ब्रह्मप्रसाधीमस्रचा वेनावः सबुद्ध्यामास्विष्टा सश्चानुमतस्वः ओं भू ब्रह्माण्डमावाहयामि ओं भू प्रजातिमावाहयामि ओं स्वपितामहमावाहयामि ओं भूर्भुवस्व हिरण्यगर्भमावाहयामि ब्रह्मणे नमायतमासनं सोमो धेनुं सोमर्वन्तमासं सोमो वीरं कर्मणि ददातु साधन्यमित्थकं सभयं पितृश्रवणं यदा तस्मै ओं भूस्वामावाहयामि ओं भूरज्ञाङ्गमावाहयामि ओं स्व इन्दुमावाहयामि ओं भूर्भुवस्वश्चन्द्रमावाहयामि सोमस्वेदमासनं ब्रह्मन् प्रोक्षिष्यामि प्रोक्षयज्ञं देवतावधेतन्नागस्तविशेषमानोऽस्तु
सप्तर्षीनागं सुता मन्त्रलोकस्तत्रयं यज्ञं यजमांसदेहि ओम प्रोक्ष सोम प्रोक्षिष्यामि प्रोक्षयज्ञं देवतावध्यतन्नागस्विषेजमानोऽस्तु सप्तर्षीनागं सुता मन्त्रलोकस्तत्रयं यज्ञं यजमांसदेहि ओम प्रोक्ष मात्रादामाधाय पवित्रेः स्थ वैष्णव्यस्थ अग्नेः स्थ वायुभूतेस्थ विष्णोर्मनसा भूतेस्थ यज्ञस्य पावने स्तः परसद्पवित्रेः स्थ वैष्णव्यो देवसवितवसोपनात्वच्छिद्रेण पवित्रेण वसोत्सूर्यस्य रश्मिरापो देवीरग्रे भोऽग्रे भोऽग्रिं यज्ञं यदाग्रे यज्ञमतिं दत्तयस्मानिन्द्रो उत्तरतूर्ये यूजमिन्द्रं निध्वं तूर्ये प्रोक्षितास्ता विष्णवे नमः विष्णोस्तुपोऽसि दक्षिणतः विष्णोस्तुपोऽसि पश्चिमतो दत्तान् दिवेभ्यः विष्णोस्तुपोऽसि कृतासि ध्रुवासि तारणासि वानस्पत्य देवेभ्यः सन्दस्व ब्रह्मण्णपः प्रणेष्यामि यजमानवातं यच्छा प्रणयज्ञं देवतावर्धयतन्नागस्विष्टे यजमानोऽस्तु सप्तर्षीनागं सुतां मन्त्रलोकस्तत्रयं यज्ञं यजमांसदेहि ओम प्रणय सोमावः प्रणेष्यामि यजमानवातं यच्छा प्रणयज्ञं देवतावर्धयतन्नागस्विष्टे यजमानोऽस्तु सप्तर्षीनागं सुतां मन्त्रलोकस्तत्रयं यज्ञं यजमांसदेहि ओम प्रणय दक्षप्रदो ब्राह्मीण तीर्थेन प्रजातमावाहयामि ब्रह्माणमावाहयमिन्द्रमावाहयमग्निमावाहयं सोममावाहयमग्निमावाहयं सोममावाहयमग्निसोममावाहयामि प्रजातिमावाहयं ब्रह्माणमावाहयमिन्द्रमावाहयं सोनावाहयं मर्दमावाहयं रुद्राणावाहयामि औपस्पृश्य ओम श्री महाविष्णुमावाहयामि बृहस्पतिमावाहयामि मित्रमावाहयं वरुणमावाहयं आदित्यानावाहयं विष्णुमावाहयं भूषणमावाहयामि कक्षमावाहयामि कक्षदेव सोमावाहयामि औपासनयज्ञमावाहयामि अग्निदेश्वान् देवानावाहयामि सर्वदेवानावाहयामि आजवागे प्रजापतिष्ठनपामिन्द्राष्टनपाज्ञेष्ठनपां सोमाष्टनपाज्ञेष्ठनपां सोमाष्टनपामि अग्निशोमाहाभ्याञ्जष्टनपां प्रजापतिष्ठनपां ब्रह्मणेष्ठनपां इन्द्राष्टनपां वसुभ्यष्टनपामि मरुद्भ्यष्टनपां रुद्रेभ्यष्टनपामि अवोपस्पृश्य ओम श्री महाविष्णवेष्टनपां मित्राष्टनपां वरुणाष्टनपामि आदित्येभ्यष्टनपां अस्यभ्याष्टनपां पूष्णेष्टनपामि कक्षाष्टनपां कक्षदेव सोमाष्टनपामि औपासनयज्ञाष्टनपामि यज्ञेदेश्वेभ्यो देवेभ्यष्टनपामि सर्वदेवेभ्यष्टनपामि आज्यं त्रिप्रतिश्रयामि चरुं त्रिप्रतिश्रयामि अग्ने ज्योतिषि समिधस्वाहा अमृतमसवारणमसि अन्तर्दं रक्षोऽन्तर्धारातयः प्रतिष्ठरक्ष प्रतिष्ठारातयः चिक्वैस्वाप्ना त्वच्छिद्रेण पवित्रेण वसोत्सूर्यसरस्वती स्वाहा पवित्रेण वसोत्सूर्यसरस्वती स्वाहा देवस्ता सुदाप्ना त्वच्छिद्रेण पवित्रेण वसोत्सूर्यसरस्वती स्वाहा मूलाग्राभ्यङ्गस्पर्शेत्वा अध्यत्वा वरुणाय नमः वायवे नमः कुबेराय नमः ईशानाय नमः ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः अग्नेय नमः जातवेदसे नमः सहोदसे नमः वीरप्रसे नमः पंक्तिरासे नमः विशत्ने नमः वैश्वानराय नमः अग्निपुरुषाय नमः अयतेन मन्यस्वा अनुमतेन मन्यस्वा सरस्तेन मन्यस्वा देवसहितः प्रसवा श्रेष्ठशतसहस्राः नितमक्षमानया अन्यद्मा आत्मा जातवेदस्तेनेध्वसवद्धे चास्मान् प्रजया पशुब्रह्मोत्सेनान्नाद्येन समेदया अस्मिन् औपासनाग्निं ब्रह्मन् समुद्धम् आदास्याधस्वा समेदे स्वाहा वायुव्यादाग्नेयान्तं प्रजापतये स्वाहा निरुत्यादेशानान्तम् इन्द्राय स्वाहा अग्नेये स्वाहा सोमाय स्वाहा अग्निसमाहाभ्यः स्वाहा प्रजापतये स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा इन्द्राय स्वाहा वसुभ्यः स्वाहा मरुद्भ्यः स्वाहा रुद्रेभ्यः स्वाहा औपस्पृश्य ओम श्री महाविष्णवे स्वाहा बृहस्पतये स्वाहा मित्राय स्वाहा वरुणाय स्वाहा आदित्येभ्यः स्वाहा सिभ्यः स्वाहा पूष्णे स्वाहा कक्षाय स्वाहा कक्षे सोमाय स्वाहा औपासनयज्ञाय स्वाहा यज्ञदिश्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा सर्वदेवेभ्यः स्वाहा ओम भू स्वाहा ओम भो स्वाहा ओम सो स्वाहा ओम भोर्भो स्व स्वाहा ऐतेन मगुस्ताः नुतेन मगुस्ताः सरस्तेन मगुस्ताः देवसवितः प्रासावीः ओम भूतिपुरोक्तिमस्तायामस्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्म अंगम आघार होमान्ते सर्वमन्त्रपर्यातनात् प्रायश्चात्तम् अतो देवादि वैष्णवं होष्ये ऐतेन मन्यस्वा नुतेन मन्यस्वा सरस्तेन मन्यस्वा देवसवितः प्रसवा ओम मतो देवाः मन्त्रदो विष्णुचक्रमे पृथिव्या सप्तसां विस्वाहा इदं विष्णुचक्रमे त्रेधानि देवदं समूढमस्वागं सुरे स्वाहा त्रीणिपदा विचक्रमे विष्णुगोपादाभ्यातदोधर्मान् धारयन् स्वाहा विष्णोः कर्माणि पश्येदोः वृदानुस्वेन्द्रस्य जसखा स्वाहा तद्विष्णोः परमं पदं सदा प्रसन् सूर्यः दिवि विचक्षरादग् स्वाहा तद्विप्रासवन्यवोजाध्रुवागं दस्मिन्ते विष्णोरुत्तरं पदग् स्वाहा ओम भू स्वाहा ओम भो स्वाहा ओम सो स्वाहा ओम भोर्भो स्व स्वाहा ऐतेन मगुस्ताः नुतेन मगुस्ताः
सरस्वतेन मुखस्थाः दिवसप्रासावीः। దేవుడు దేవియునదే తెరదీయరే, పువ్వుల దండలు తీసి పువ్వులీయరే. దేవుడు దేవియునదే తెరదీయరే, పువ్వుల దండలు తీసి పువ్వులీయరే. కన్నుల నిద్దురదేరా గక్కన మేలుకొని, ఉన్నతి మొకాలు చూచేరొకరొకరు. కన్నుల నిద్దురదీరా గగ్గన మేలుకొని, ఉన్నతి ముఖాలు చూచేరొకరొకరు. పన్నీరందియరే పావడలు నందియరే, పన్నీరందియరే పావడలు నందియరే. గన్నర కాళాంజి దగ్గర బట్టలే. దేవుడు దేవియునదే తెరదీయరే, పూల దండలు తీసి పువ్వులీయరే. నగవులు నగుకొంటా నంటున లేచి కూచుండి, పొగి కురులు దిద్దేరు ఒకరొకరు. నగవులు నగుకుంటా నంటున లేచి కూచుండి, పొగి కురులు దిద్దేరు ఒకరొకరు. తగనత్తాలు చూపరి తతితో బాగాలీయరే, తగనత్తాలు చూపరి తతితో బాగాలీయరే. మొగరు దేర కస్తూరి ఉండలీయరే. దేవుడు దేవియునదే తెరదీయరే, పూల దండలు తీసి పువ్వులీయరే. तस्मदे पूर्णं शास्त्रकल्लोलसङ्करं विष्णुभक्तिदकं शुद्धं वन्दे श्रीभगवानोर्नवम् अथ भगवतो महावृषस्य श्रीमदादिनारायणस्य अचिन्त्यापरिशक्त्या भ्रियमाणस्य महाजलौघस्य मध्ये परिभ्रमणानाम् अनेककोटिब्रह्माण्डानां व्यकतमे पृथिव्यप्तेजवायुवाकाशाहङ्कारमदव्यक्ताख्य सप्तावर्णैरावृते अस्मिन् महति ब्रह्माण्डे आधारशक्ति श्रीवराह कूर्मानन्दाष्टदिग्गजोपरि प्रतिष्ठितानाम् अतल वितल सुतल नितल प्रतल महातल सातल तलातल सप्तपातालाक्ष सप्तलोकानां ऊर्ध्वभागे भूलोक भुवर्लोक सुवर्लोक महर्लोक जनोलोक तपोलोक सत्यलोकाख्य षल्लोकानाम् अधोभागे
महानालायमानस्य फणिराजस्य शेषस्य सहस्रफणामणिमण्डलमण्डिते ऐरावतपुण्डरीकवामनकुमुदाञ्जनपुष्पदन्तसार्वभौम सुप्रतीकाख्य अष्टदिग्दण्डे सुण्डादण्डोत्तम्बिते अमरावती तेजोवती संयमनी रक्षोवती सिन्धुमती गन्धवत्यलकावती यशोवती इत्यष्टदेवपुरी विराजिते इंद्राग्नेयमनिरुते वर्णवायु कुबेरीषाढाख्य अष्टलोकपालकपरिपालिते लोकालोकचलवलयिते लवणेक्षुसुरा सर्पितधिक्षीरशुद्धोदकाख्य सप्तार्णवपरिवृते जम्बूप्लक्षकुचक्रौञ्च सागसान्मणि पुष्कराकाख्य सप्तद्वीपद्वीपते माहेन्द्रमले सह्यदृक्तमदृक्तमद्विन्द्यपर्यात्राख्य सप्तकुलपर्वतविराजिते भारतकिंपुरुषहारीलावृतभद्राश्वकेतु कमालक रमणक कुर्वर्षाख्य नववर्षाणां मध्ये भरतवर्षे महासरोवराकार 50 योजना विस्तीर्ण भूमंडले 100 योजन विस्तीर्ण जम्बोद्वीपे दंडकारण्ये प्रजापति क्षेत्रे कर्मभूमौ अवंति कुरुक्षेत्रादि समभूमध्यरेखायाः पूर्वदिग्भागे श्री आदिवराह क्षेत्रे मम अनेक जन्मसु इह जन्मनि च एतक्षणपर्यन्तं बाल्ययौवन कौमार वार्धकेषु रहसि प्रकाशे च आवृत्त अनावृत्त महापातकादि समस्त दुरितक्षयार्थं दशपूर्वेषां दशापरेषां मत्वंस्यानां मातृवंस्यानां सर्वेषां पितॄणां कुम्भीपाकलोहितधामा संघातप कालसूत्रादि विविधेभ्यो महाघोरेभ्यो नरकेभ्यः उत्तीर्य तले सूर्यमण्डलपर्यन्तं कृतराशेर्वसहस्रावसाने एकैकतरापकर्षणक्रमेण सर्वराश्वपकर्षमितकाले श्रीहरिलोके निवासिद्ध्यर्थं त्रिगुणीकृत अग्निष्टमातिराप्ताप्तोर्याम शान्तवनवाजपेयपौण्डरीकाश्वमेधादि शतक्रतपुण्यफलावाप्त्यर्थम् आमोद प्रमोद सम्मोद वैकुण्ठाख्यलोकेषु सालोक्य सारूप्य सामीप्य सायुज्य चतुर्विधमोक्षप्रसिद्ध्यर्थं परव्यूह अन्तर्यामि अर्चावतार स्वरूपरोणैः भृग्वादिभिर्मन्वादिभिर्दिव्यवशिष्ठादियुक्तगृह कन्यादानकल्पोक्त कन्यादान महादानं करिष्ये। अस्य श्रीमदादि नारायणस्य अनेककोटिब्रह्माण्डनायकस्य अनन्तकल्याण गुणगणगाम्भीर्यस्य दिव्यमङ्गलविग्रहस्य शङ्खचक्रगरापद्माङ्कित कोटिसूर्यप्रकाशकस्य श्रीमतो वैकुण्ठनायकस्य श्रीमद्वैखानस आगमोक्तप्रकारेण आङ्गीरसबारहस्पत्य भारद्वाज त्रयार्षीयप्ररान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य परव्योः अन्तर्यामि अर्चावताररूपस्य श्रीमहाविष्णोः परब्रह्मणोर्नप्त्रे आङ्गीरसबारहस्पत्य भारद्वाज त्रयार्षीयप्ररान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य जगत्कारणभूतस्य मूलप्रकृति स्वकीयमानस्य त्रिगुणात्मकस्य गुणत्रयकर्मणो ख्यातिवशादि उत्पत्तिस्थितिलय कारणभूतस्य श्रीमहाविष्णोः परवासुदेवशर्मणः पौत्राय आङ्गीरसबारहस्पत्य भारद्वाज त्रयार्षीयप्ररान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य समस्त देवतागण निकुट मकुट मणिगण विजृंभित पादारविन्दस्य श्रीमहाविष्णोः आदिनारायणशर्मणः पुत्राय आङ्गीरसबारहस्पत्य भारद्वाज त्रयार्षीयप्ररान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवाय भक्तलोकपरिपालनाय किरीटहार केयूर दिव्याभरणभूषिताय कौस्तुभालङ्कृताय दिव्यपीताम्बरधराय निजावताराय स्वर्णगरुडवाहनारूढाय अचिन्त्यदिव्याद्भुत नित्ययौवन स्वाभावलावण्य तेजोरत्नाकराय अखिलशाखाध्यायिनो श्रवणनक्षत्रे मकररासु जाताय श्री श्रीनिवासस्वामी परब्रह्मणे वराय ऋग्यजुस्सामधर्मण सकलवेदाध्यायिनीं भार्गवच्यवनाप्नुवान् और्ववैदुल पञ्चार्षे प्रराणित भार्गवसगोत्रोद्भवीं सर्वालङ्कारवतीं सर्वाङ्गना संसेवित पादारविन्दां श्रीमहाविष्णोः वक्षस्थलनिवासिनीं अनन्तगुणात्मिकां भृगो सङ्कल्पतनयां
भार्गवीम् उत्तरफल्गुनी नक्षत्रे कन्यारासु जातायां श्री श्रीदेवी नाम्नीम् इमां कन्यां ऋणीत्वमे दास्यामि। ऋग्यजुस्सामधर्मण सकलवेदाध्यायिनीं काश्यप आवत्सार नैध्रव त्रयार्षे प्ररान्वित काश्यपसगोत्रोद्भवीं सर्वालङ्कारवतीं सर्वाङ्गना संसेवित पादारविन्दां श्री महाविष्णोः अत्यन्तमनोहरीं कश्यप प्रजापतेः संकल्पतनयां काश्यपीं रेवती नक्षत्रे मीनरासु जातायां श्री भूदेवी नाम्नीं इमां कन्यां ऋणीत्वमे दास्यामि। कन्यां कनकसम्पन्नां कनकाभरणेरुतां दास्यां विष्णवे तुभ्यं ब्रह्मलोकं जिगीर्षया सालङ्कृतां मां साध्वीं सुशीलाय सुमेधसे प्रेतोऽहं प्रयच्छामि सर्वकाम्यार्थसिद्धये। विश्वम्भरा विश्वरूपा साद्गुण्यः सर्वदेवताः इमां कन्यां प्रदास्यामि प्रीणातु कमलापति। कन्यादानसुमुहूर्तोऽस्ति भवन्तो महान्तो न गृह्णन्तु सुमुहूर्तोऽस्तु। ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. கோவிந்தா கோவிந்தா. திருமலை அப்பனுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே அக்னி பிரதிஷ்டை ஹோமம், மதுபர்க்க பூஜை, திரைப்பிடித்தல், வஸ்திர சமர்ப்பணம் மற்றும் மகா சங்கல்பம், கன்னியாதானம் ஆகிய கைங்கரியங்களை சேவித்தோம். இதோ இப்பொழுது மாங்கல்யங்களுக்கு பூஜை நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது. அந்த மாங்கல்ய பூஜையை சேவிக்கலாம். பகவானை சேவிக்கும் பொழுது நம்மை எல்லாம் காப்பான் என்ற ஒரு நோக்கத்தோடு அவனை சேவிக்கிறோம். எம்பெருமானே, உன்னை தவிர இந்த உலகத்திலே வேறு யாரும் காப்பவர் இல்லை, அப்படி காப்பாரார் இவ்விடத்து என்பது நம்மாழ்வார் பாசுரம். அப்படி காப்பாற்றுபவனைத்தான் நாம் சேவித்து கொண்டிருக்கிறோம். கல்யாண உற்சவத்திலே மாங்கல்ய பூஜையை தன் சகோதரன் ராவணனுக்கு இதம் சொல்லி பார்த்தான் விபீஷணன். அவனோ கேட்பதாக இல்லை. தம்பி என்றும் பாராமல் விபீஷணனை தூஷித்தான். உடனே விபீஷணன் 4 ராட்சசர்களுடன் ஆகாச மார்க்கமாக சென்று தென் சமுத்திரத்தின் வடக்கு கரையிலே இருந்த ராமபிரானிடம் சரணாகதி செய்ய வருகிறான். சுக்ரீவனை நோக்கி கையை கூப்பிக்கொண்டு ராமபிரானிடம் தான் சரணடைய வந்திருப்பதாக கூறுகிறான் விபீஷணன். சத்ருவான ராவணனின் தம்பியானபடியால் இவனை நம்முடைய கூட்டத்திலே சேர்த்து கொள்ளக்கூடாது என்று சுக்ரீவன், மைந்தன், விவிதன், அங்கதன் போன்றவர்கள் கூறினார்கள். ஆஞ்சநேய சுவாமி விபீஷணனை நம் கோஷ்டியில் சேர்த்து கொள்ளலாம் என்று கூறினார். ராமபிரானும் நானும் அதைத்தான் எண்ணுகிறேன் என்றாராம். மித்ரபாவேன சம்பிராப்தம் நத்தி தேஜம் கதஞ்சன தோஷோ யத்யபி தஸ்ய ஸ்யாத்யாசதாம் ஏதத் அகர்ஹிதம் என்று அந்த ராமபிரான் கூறுகிறார். அதாவது நட்பு முறையில் வந்தவனை நட்பு முறையில் அடைந்தவனை கைவிடக்கூடாது, அவனிடம் தோஷம் இருந்தாலும் பரவாயில்லை என்று சொன்னாராம். ஒரே ஒரு தடவை என்னை சரணடைந்தவர்களை நான் கைவிட மாட்டேன். ராமபிரானே, நான் உன்னுடையவன். எவன் வருகிறானோ அவனுக்கு நான் அபயம் அளிக்கிறேன் என்று கூறி ஆசிரித்தர்களை காக்கும் இயல்பு தனக்கு இருப்பதை ராமபிரான் வெளியிடுகிறார். இவ்வாறு ரட்சிக்கும் எம்பெருமானுக்கு ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியம் நடைபெறுகிறது. தேனும் மாங்கல்ய பூஜை நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது. பகவானே, வேங்கடவனே, கோவிந்தா 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 என்று தேனும் பாலும் கண்ணலும் அமுதமாகி தித்திப்ப யானும் எம்பிரானையே ஏத்தினேன் யானுய்வானே என்கிறார் நம்மாழ்வார். அந்த பாசுரத்திலே மக்களுக்கு தேவையான சோறும் நீரும் எப்பொழுதும் வேண்டும். இவ்வாறே பெருமாளை நினைக்கும் பொழுது அன்பே தாம் உண்ணும் சோறும் குடிக்கும் நீரும் ஆகிறது. இறையன்பால் ஏற்பட்ட அந்த இன்பமானது பொறி உணர்ச்சியை கடந்து உயிர்களிடத்திலே ஜீவராசிகளில் ஏற்பட்ட இன்பம் என்பது. ஸ்ரீதேவி பூதேவிகளின் மணவாளனாய் தயை முதலிய குணங்களுக்கு கடலாக தேவதேவனாய் உலகிற்கு ஒப்பற்ற புகழாய் நித்திய சூரிகளான ஆதிசேஷன் முதலியவர்களால் பூஜிக்க பெற்றவனாய்
செல்வமெல்லாம் செழிக்கப் பெற்று திருவேங்கடத்திலே வாழும் திருமாலே என்று விடியற் காலையிலே கூறும் சுப்பிரபாதத்தில் பங்கு கொண்டவனே, உன்னுடைய கல்யாண உற்சவத்தை பக்த கோடிகள் கண்டு கொண்டுள்ளனர். என்னே பாக்கியம் என்று கூறுகிறார்கள். இதோ மாங்கல்ய பூஜை முடிந்து மாங்கல்ய தாரணம் நடைபெற உள்ளது. சேவிக்கலாம் நாச்சிமார்களை. லக்ஷ்மி ரமண கோவிந்தா, வசுந்தரா ரமண கோவிந்தா கோவிந்தா. அந்த மாங்கல்யங்களை பக்தர்களுக்கு भुवनत्रयम् श्रिये जातश्रियः श्रियम्बयो चतुर्भ्यो दाति श्रियम्बसानामृतत्तमायन् भवन्तु सत्यासमिदां दद्रौः माङ्गल्यदेव्यै नमः माङ्गल्यधारणसमुहूर्तोऽस्ति भवन्तो महान्तो न गृह्णन्तु सुमुहूर्तोऽस्तु सुप्रतिष्ठितमस्तु प्रजापतिस्त्वामगं राजानमुसृजत तन्त्रयो वेद अन्वसृज्यन्त तान् हस्ते कुरुत अथ सीता सावित्री माङ्गल्यं वन्दनानेन लोकरक्षणहेतवे कण्ठे भद्रां शुभे रक्षध्वं भुवनत्रयम् मेदिनी देवी वसुन्धरी स्याधुधा देवी वासवी ब्रह्मवर्चसः पितॄणां श्रोत्रं च कर्मणः भूदेव्यै नमः माङ्गल्यधारणसमुहूर्तोऽस्ति भवन्तो महान्तो न गृह्णन्तु सुमुहूर्तोऽस्तु सुप्रतिष्ठितमस्तु। ऐदेन मन्यस्वानुदेन मन्यस्वा सरस्तेन मन्यस्वा देवतप्रसवा अग्निरेत प्रथमो देवता नागंसोहस्य प्रयामंशतमतवाशात् तदेकं राजावनोन मन्यतामधेग्स्त्रीपत्रमहनुरोधात् स्वाहा इमामग्निस्त्रायताङ्गारभत्यः प्रयामंशतमतवाशात् तदेकं राजावनोन मन्यतामधेग्स्त्रीपत्रमहनुरोधात् स्वाहा इमं मे वर्णस्य देहमद्वाचमुडिया त्वां वत्सराजके स्वाहा तत्त्वाजां ब्रह्मणा वन्दमानस्दाशाः स्तेजमानोभिर्भिः अहेडमानवर्णेह बोद्धं समानाय प्रमोषि स्वाहा तन्नाग्नेवर्णस्य विद्वान् देवसेडवयाशिष्टाः यजुष्ठावनितमस्सोजानो विश्वाद्देशागं प्रमुत्य स्वाहा तन्नाग्ने मो भवति नेदस्यास्यावसोऽव्यष्टौ अवयक्ष्णवर्णमृणानो विहिमृडेगं सोऽनेधि स्वाहा तमग्ने अयास्यासन्मनसायतः हयासन् हव्यमूचे यानो देहि वेजग् स्वाहा
ఓం భూ స్వాహ ఓం భూ స్వాహ ఓం స్వ స్వాహ ఓం భూర్భో స్వ స్వాహ ఐతే నమః స్వాహ నమతే నమః స్వాహ సరస్తే నమః స్వాహ దేవసవిత ప్రాసావీః ఓం భూవతి పురోక్తమిష్టాయామస్యాం శ్రీనివాసస్వామినః వైవాహికోత్సకర్మాంగం లాజహోమం హోష్యే ఐతే నమః స్వాహ నమతే నమః స్వాహ సరస్తే నమః స్వాహ దేవసవిత ప్రసవ ఇమాం లాజాంతి ఆజ్యవిగార్యాం ఇమాం లాజానాపామి సమృద్ధికరణాన్ మమ తుభ్యంత సంభరణాం సదగ్నిరణమన్యతాం యన్నార్యవ బ్రూతే అగ్నౌ లాజానౌవంతి దీర్ఘాయురస్తరేపతిరేధంతాం జ్ఞాతయో మమ స్వాహ ఉదాజుసా స్వాయుషోదోహృదేనాగుమృధేనోత్తర్జన్యస్య పుష్పేణోదస్థామృతాగుంహను విశ్వావదత్వయాభయం ధారావదన్యాయవ అతిగాహే మహేద్దిశః ఇమాం లాజానాపామి సమృద్ధికరణాన్ మమ తుభ్యంత సంభరణాం సదగ్నిరణమన్యతాం యన్నార్యవ బ్రూతే అగ్నౌ లాజానౌవంతి దీర్ఘాయురస్వరేపతిరేధంతాం జ్ఞాతయో మమ స్వాహ ఉదాయుసా స్వాయుషోదోహృదేనాగుమృధేనోత్తర్జన్యస్య పుష్పేణోదస్థామృతాగుంహను విశ్వావదత్వయా విజం ధారావదన్యాయవ అతిగాహే మహేద్దిశః ఇమాం లాజానహపామి సమృద్ధికరణాన్ మమ తుభ్యంత సంభరణాం తదగ్నిరణమన్యతాం యన్నార్యవ బ్రూతే అగ్నౌ లాజానౌవంతి దీర్ఘాయురస్వరేపతిరేధంతాం జ్ఞాతయో మమ స్వాహ ఉదాజుసా స్వాయుషోదోహృదేనాగుమృధేనోత్తర్జన్యస్య పుష్పేణోదస్థామృతాగుంహను విశ్వావదత్వయా విజం ధారావదన్యాయవ అతిగాహే మహేద్దిశః ఓం భూ స్వాహ ఓం భూ స్వాహ ఓం స్వ స్వాహ ఓం భూర్భో స్వ స్వాహ ఐతే నమః స్వాహ నమతే నమః స్వాహ సరస్తే నమః స్వాహ దేవసవిత ప్రాసావీః ఓం భూవతి పురోక్తమిష్టాయామస్యాం శ్రీనివాసస్వామినః వైవాహికోత్సకర్మాంగం లాజహోమాంతే సర్వమంతరవర్యాతనున్నాత్ ప్రాశ్చాత్తమతో దేవైత వైష్ణవం హోష్యే తేన మన్యస్వా నమతేన మన్యస్వా సరస్తేన మన్యస్వా దేవసవిత ప్రసవా ఓం మతో దేవాహమంతరద విష్ణుచక్రమే దివ్యా సప్తాం విశ్వాహ ఇదం విష్ణుచక్రమే త్రేధాని దేవం సమూఢమస్వాగం శ్రే స్వాహ త్రీణి పదావిచక్రమే విష్ణు గోపారాభ్యాతధర్మాన్ ధారయన్ స్వాహ విష్ణో కర్మాణి పశ్యేదో వృధాన్ వసే ఇంద్రస్య జసఖా స్వాహ తద్విష్ణో పరమం పదకం సదా పశ్యన్ సూర్య దివీవచక్షురాదగ్గ స్వాహ తద్విప్రాసవన్యవోజార్ధ్రవాగం దస్సవిందదే విష్ణోర్జత్రం పదగ్గ స్వాహ ఓం భూ స్వాహ ఓం భూ స్వాహ ఓం స్వ స్వాహ ఓం భూర్భో స్వ స్వాహ ఐతే నమః స్వాహ నమతే నమః స్వాహ సరస్తే నమః స్వాహ దేవసవిత ప్రాసావీః ఓం భూవతి పురోక్తమిష్టాయామస్యాం శ్రీనివాసస్వామినః వైవాహికోత్సకర్మాంగం కర్మసాఫలితం పరిష్టాతంత్రం కరిష్యే ఐతేన మన్యస్వా నమతేన మన్యస్వా సరస్తేన మన్యస్వా దేవసవిత ప్రసవ యదస్కర్మణోతిరిదమిద్యాన్యూన మహాకర్మగ్నిష్టష్టం కరోతు స్వాహ అగ్నేః సుష్టగతే సుతాహుతోతే నాంకామానగ సముద్రత్రే స్వాహ అగ్నే స్వాహ అగ్నేనాదాయ స్వాహ అగ్నేనపదే స్వాహ ప్రజాపతే స్వాహ ఇంద్రాయ స్వాహ విశ్వేభ్యో దేవేభ్య స్వాహ సర్వాభ్యో దేవతాభ్య స్వాహ సర్వత్రైవాష్టం సర్వత్రైవాణాష్టం దేవతమూష్మై స్వాహ అగ్నేః సుష్టగతే స్వాహ వాస్తుపదే నమ వాస్తుపదే స్వాహ యన్మాత్రం ఇందాబోదగ్నిస్తత్తనరాః జాతవేదాభిచితి స్వాహ పునరగ్నిశ్చక్షురాత్ పునేంద్ర బృహస్పతి పునర్మ్యాశ్వావ్యం చక్షాత్మక్షో స్వాహ ఇష్టేభ్య స్వాహ శ్రేష్ఠేభ్య స్వాహ బేజందృష్టే స్వాహ నిష్కృత్యై స్వాహ దేవరాధ్యై స్వాహ దేవేభ్య స్వాహ తనోభ్య స్వాహ వృద్ధ్యై స్వాహ సమృద్ధ్యై స్వాహ సర్వసమృద్ధ్యై స్వాహ ఆశ్రావితమత్యాశ్రావితం వషట్కృతమత్యనోక్తం జగ్నే అతిరిక్తం కర్మణ క్షేణమగ్న పర్వాణి ప్రతినేత కల్పయన్ స్వాహ కృతాదేవాన్ స్వాహ స్వస్తనేంద్రోర్ధస్వాస్తన పూషాశ్వేదాః స్వస్తనస్తాక్షరిష్ఠిమిస్న బృహస్పతిదాత స్వాహ యథో శరీరమే స్వాహ సమితేజస్తేజమేదే స్వాహ యమస్దేవ్యర్మే పాయ స్వాహ సూర్యస్దేమే చక్షుర్మే పాయ స్వాహ सोमसधीमे चित्तमे पाय स्वाहा वायोर्धीमे प्राणान्मे पाय स्वाहा ब्रह्मणोधीमे बुद्धिमे पाय स्वाहा सप्तते अग्नि सप्त सप्तैपा सप्तर्षे सप्ताम प्रियाणि सप्तहोत्रा सप्तात्वा इंद्रिय सप्तयो निरावरण स्वागतेन स्वाहा अग्निर्भुक्तं वेदिर्भुक्तं देवर्भुक्तं पतिर्भुक्तं औषध वनस्पति अंदराश्य भुक्तं अग्निर्जीर्णं वेदजीर्णं देवर्जीर्णं पतिर्जीर्णं औषध वनस्पति अंदर्भाश्य जीर्णग स्वाहा समन्तां भवशाउतेन समादित्यै
वसुभिः सम्मरुद्भिः समिन्द्रेण विश्वेभिर्देवेभिरन्तां दिव्यं नभो गच्छति यत्स्वाहा सप्तते अग्ने समिदः सप्तैः सप्तश सप्तावप्रियाणि सप्तहोत्रा सप्तधात्वा इन्ति सप्तयोनिरावृणस्वागतेन स्वाहा अग्निस्त्रिपदो वेदस्त्रिपदो देवस्त्रिपदो पृथ्वीस्त्रिपदो ब्रह्माद्यास्त्रिप्यन्तां पोषधनुस्पन्दां यदक्षप्रदा महाप्रदा महासाक्ष्यमस्तत्रिप्यन्ताम् ऐतेन मग्रस्ताः हनुमतेन मग्रस्ताः सरस्तेन मग्रस्ताः देशतपासाभिः पवित्रमसि पवित्रं मे भूयात् स्वाहा पूर्णमसि पूर्णं मे भूयात् स्वाहा चेष्टाः प्राचाः देवार्चमाद्यन्तां दीचाः त्रिग्रहाः पशवमाद्यन्तां उदीहीचान्दशाभोषदेवनस्पतिमाद्यन्तां बुद्धायाः यज्ञसंवत्सरो यज्ञपतिर्माद्यन्तां अथोदरात्रे नागेभ्यमाद्यन्तां दक्षिणतः पदेपनया पश्चिमतः पदेपनया उत्तरतः पदेपनया दक्षिणतः विष्णुः सरंसि पश्चिमतः विष्णुः सरंसि प्राच्यां विष्णुः सरंसि सर्वान् समूष्य ग्रन्थिं विसृज्य अद्भिः प्रोक्ष्य आप्यायन्त्वामिति जुहोति आप्यायन्त्वामाबवोषधयो मरुदां वृषधयश्च दिवं गच्छ ततो नोरुष्टिमेरय स्वाहा शुद्ध्यन्तां देवसदनं भूतिस्माते लभते नित्यगं सर्वयज्ञकृतिं भवेत् अग्निमारुतयोद्भूतिः आदित्यः सोमो नमः त्र्यायुषं जमदग्नेः कश्यपस्य त्र्यायुषं तद्देवानाः त्र्यायुषं तन्मे अस्तु त्र्यायुषं दीर्घायुत्वाय बलाय शताय शतं च वर्षे त्र्यायुषम् आपोहिष्टामयो भोस्तानमूर्जे ददातना महेरणाय चक्षुषे योपश्रुतमोदस्तभाजेतेन उषतीरिव मात्रः तस्माहरङ्गमावोय शिक्षया जन्मदा आपो जनयधा जनः दीर्घायुत्वाय बलाय शताय शतं च वर्षे त्र्यायुषम् आपोहिष्टामयो भोस्तानमूर्जे ददातना महेरणाय चक्षुषे योपश्रुतमोदस्तभाजेतेन उषतीरिव मात्रः तस्माहरङ्गमावोय शिक्षया जन्मदा आपो जने धाजनः यत्ते ज्ञेतेजस्वीनाहं तेजस्वी भूयासमस्ते ज्ञेवर्तस्वीनाहं वर्तस्ते भूयासमस्ते ज्ञारस्तेनाहं हरस्ते भूयासं मयि मेधां मयि प्रजां मयि अग्निस्तेजो दातु मयि मेधां मयि प्रजां मयि इन्द्रियेन्द्रियं ददातु मयि मेधां मयि प्रजां मयि सूर्योद्भ्राजो दातु योक्षसूर्यं दृशे अवदगान् मातोर्नवात् विभ्राजमानसरस्समध्या समार्षभोरोहिताक्षसूर्य उपसन्मनसा पुनातु मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं दासना कायेन वाचां सेन्द्रियाध्यात्मना उपविष्टवात् करोमि यत्तकम्बरस्मै श्रीमन्नारायणाय समर्पयामि ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः यथास्थानं प्रवेशयामि अग्निपुरुषाय नमः अग्निभारं निवेदयामि अग्निपुरुषाय नमः सर्वं श्री भूनीलासमे श्रीनिवासार्पणमस्तु। ஓம் நமோ வெங்கடேசாய. கோவிந்தா கோவிந்தா. திருமலை அப்பனுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே நாம் லாஜஹோமம் பிரதான ஹோமம் அஞ்சனமிடுதலை சேவித்தோம். அடுத்ததாக வாரணமாயிரம் கைங்கரியத்தை சேவிக்க இருக்கிறோம். வாரணமாயிரம் என்பது ஆண்டாளுடைய கனவின் விற்த்தாந்தங்களை கூறும் பாசுரங்களை பாடிக்கொண்டே அந்த தேங்காய்களை உருட்டுவார்கள். அதன் தொடர்ந்து அந்த பகவானுக்கும் நாச்சிமார்களுக்கும் இடையே இருக்கும் இடைவெளியை சமப்படுத்த மாலா பரிவர்த்தன கைங்கரியத்தை செய்ய உள்ளார்கள். இப்பொழுது நாம் வாரணமாயிரம் கைங்கரியத்தை சேவித்தோம். தொடர்ந்து மாலா பரிவர்த்தன கைங்கரியம் பகவானுக்கும் அந்த நாச்சிமார்களுக்கும் மாலைகள் மாற்றப்படும். அந்த மாலைகளை மாலா பரிவர்த்தனம் என்று கூறுவார்கள். ஸ்ரீதேவி பூதேவி பிராட்டிமார்களுடைய கழுத்திலே இருந்த மாலை பெருமாளுக்கும்,
பெருமாளுடைய தோள்களை அலங்கரித்த மாலை ஸ்ரீதேவி பூதேவி பிராட்டிக்குமாக இப்படி பரிவர்த்தனம் செய்கிறார்கள். அந்த மாலா பரிவர்த்தன கைங்கரியத்தை சேவிக்கலாம். கோவிந்தா கோவிந்தா, திருமலையப்பனே வேங்கடவனே கோவிந்தா கோவிந்தா, லக்ஷ்மி ரமண கோவிந்தா கோவிந்தா என்று அந்த ஸ்ரீதேவி பிராட்டி காண்பித்த மாலை எம்பெருமானுடைய தோள்களை அலங்கரிக்க வருகிறது. அந்த எம்பெருமான் மாலையை அணிந்து கொள்ள காத்து கொண்டிருக்கிறார். சப்தகிரி வாசனே வேங்கடவனே கோவிந்தா கோவிந்தா என்று அந்த சப்தகிரி வாசன் மாலையை அணிந்து கொண்டான். அதை தொடர்ந்து அந்த மாலை திரும்பவும் பூமி பிராட்டிக்கு அனுப்பப்படுகிறது. பூமி பிராட்டி அந்த மாலையை அணிவதற்காக காத்து கொண்டிருக்கிறாள். தராரமண கோவிந்தா கோவிந்தா என்று பூமி பிராட்டியினுடைய கழுத்திலே மாலையை அணிவித்தார். அதை தொடர்ந்து பக்த பராதீனன் வேங்கடவன் அந்த பகவான் மாலையை பூமி பிராட்டியினிடமிருந்து பெற்று தன்னுடைய தோள்களை அலங்கரித்து கொள்ள காத்து கொண்டிருக்கிறான். வெங்கடாச்சலனே கோவிந்தா கோவிந்தா, கோவர்தனகிரிதாரி கோவிந்தா கோவிந்தா என்று அந்த எம்பெருமானை சேவித்தோம். அடுத்ததாக மூவரையும் ஒரே சிம்ஹாசனத்திலே ஆசீனப்படுத்தி அதன் பிறகு அக்ஷதாரோபணம் என்னும் தலம்பரால கைங்கரியம், அதைத் தொடர்ந்து மங்கள நீராஜனத்துடன் திருக்கல்யாண மகோத்சவம் நிறைவேறுகிறது. கோவிந்தா கோவிந்தா, லக்ஷ்மி ரமண கோவிந்தா, தராரமண கோவிந்தா. विनाव्यङ्कटेशं ननाथो ननाथः सदा व्यङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि। हरे व्यङ्कटेश प्रसीद प्रसीद, प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ।